Okay, so hi, this is Tanu Vermani. I'm from Baby Code IELTS, and today's session is about strategies for yes, no, not given question. So, in this session, we will look at some of the strategies and tips for yes, no, not given questions. Apart from this, we will strategize how you can conclude which statement is yes, no, or not given. So, we will do this with an example. Later on, we will practice some of the exercises as well. Okay, so let's get started. What are yes, no, not given questions? Yes, no, not given question is a type of task which comes in your academic reading or even in your general reading questions. Now, here, candidates are required to identify whether the writer's views or claim agree with the given statement or not. दैट मीन्स जैसे हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करा था लास्ट सेशन में, इट वाज अबाउट कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, वो किस पे बेस्ड होते हैं, फैक्ट पे बेस्ड होते हैं. बट दिस yes no not given, it is based on writer's claim, राइटर्स के व्यू पे बेस्ड होते हैं, राइट ये फैक्ट पे बेस्ड नहीं होते, राइटर के क्लेम पे या राइटर के व्यू पे, उनके ओपिनियन पे बेस्ड होते हैं. एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये स्टेटमेंट यस है, नो है या नॉट गिवन है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिमिलर टू योर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन. नाउ योर आंसर शुड बी कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स आपकी वो स्टेटमेंट मैच करती है राइटर के ओपिनियन से, देन इट इज सेड टू बी यस. तब हम उसे क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे. बट अगर आपकी इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती राइटर के ओपिनियन से, then it is said to be no. And if the information is not found in the given passage, अगर वो information ही नहीं है आपके passage में, तब हम उसे क्या बोलेंगे, not given बोलेंगे, right? So there are three things जो आपको focus करनी है. Very first is कि अगर आपकी information match कर रही है राइटर के ओपिनियन से, दैट मीन्स जो आपका क्वेश्चन है, जो आपकी स्टेटमेंट है, अगर वही सेम मीनिंग, वही सेम व्यू आपका टेक्स्ट में भी प्रेजेंट है, देन इट इज सेड टू बी यस. दैट मीन्स वो राइटर के ओपिनियन से मैच कर रहा है. बट अगर वो इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, तो वो क्या है, नो है. और इफ समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन वहां पर दी ही नहीं गई है पैसेज में, देन इट इज नॉट गिवन. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप्स. कौन सी ऐसी टिप्स है जो इम्पोर्टेंट है आपके yes no not given questions के लिए? So one of the advantage of starting with these questions first in your article is that the answers usually appear in order in the text. अब सबसे पहली एडवांटेज क्या है अगर आप इन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो अपने मॉक टेस्ट को, अपने पैसेज को, बिकॉज आंसर्स जो होते हैं यहाँ पे किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्डर में, राइट. दैट मीन्स आपको फर्स्ट आंसर बिगनिंग में मिलेगा, देन सेकेंड आंसर, देन थर्ड. सो आंसर्स आर इन ऑर्डर, सारे आंसर्स ऑर्डर में होते हैं. दैट मीन्स यू कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन एनी ऑर्डर, आप इजिली लोकेट कर लोगे फर्स्ट आंसर को, राइट. Second important tip is difference between no and not given is that a no can be proven. अब no और not given में क्या डिफरेंस होता है कि no को हम प्रूव कर सकते हैं. कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वहां पे कोई एविडेंस होगा कि वो ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्टिंग है. नाउ सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि तनु मैम इज टेकिंग क्लास एट 4 PM, राइट. बट अगर वहां पे मेंशन है कि तनु मैम इज टेकिंग क्लास एट 4 AM, सो वो कॉन्ट्रडिक्टरी है. स्टेटमेंट प्रेजेंट है कि क्लास का टाइमिंग क्या है, बट द ओनली पार्ट इज कॉन्ट्रडिक्टरी, तो उसको आप प्रूव कर सकते हैं, राइट. नॉट गिवन को आप प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज वो गिवन ही नहीं होता, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. लेकिन नो के लिए देयर इज अ एविडेंस, आपके पास एविडेंस होता है जिसे आप सपोर्ट कर सकते हो बिकॉज उसका ऑपोजिट दिया होता है. वेयर एज नॉट गिवन वो वहां यूज होता है जहां पे आपको कोई एविडेंस नहीं मिलता सपोर्ट करने के लिए भी या कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए. ना ही वो ट्रू है, ना ही वो यस है, ना ही वो नो है. Remember कि whole sentence need to be mentioned in the article for considered it a yes or no.
आपका पूरा सेंटेंस वहां पे मेंशन होना जरूरी है, तभी वो यस होगा, तभी वो नो होगा, ठीक है। बट अगर आपका ओनली पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया है, देन द आंसर शुड बी नॉट गिवन। कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है मेरी स्टेटमेंट में? टाइमिंग 4 AM 4 PM। यस, एम आई क्लियर? एनीवन? एनी डाउट्स? No, यस, ma'am. ओके। सो प्लीज नो मेक मैम। श्योर कि नो को आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग आपको मिलेगा स्टेटमेंट। टेक्स्ट में पार्ट कुछ होगा एंड क्वेश्चन में पार्ट कुछ होगा, बट नॉट गिवन में आपको वो एंटायर स्टेटमेंट का मीनिंग नॉट गिवन होगा। राइट? क्लियर? नाउ लेट्स लर्न दिस विद एन एग्जाम्पल। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि कैसे आपको येस नो नॉट गिवन फाइंड आउट करने हैं। राइट? सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर on my screen. Question number 6 to 10. Do the following statements agree with the claim of writing in the reading passage? अब ये yes no not given है। yes का मतलब if statement agrees, agree करती है राइटर के क्लेम से, उनके ओपिनियन से। नो का मतलब है कि स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। नॉट गिवन का मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू से कि राइटर क्या बोल रहे हैं, दैट मीन्स आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पैसेज में। नाउ लेट्स लुक एट these 5 questions here. Question number 6. Children from monoculture learn foreign languages more slowly than those from multicultural societies. अब जब भी आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने क्वेश्चंस को रीड करते हो, राइट? क्वेश्चंस को रीड करोगे एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन योर की इंफॉर्मेशन कि चिल्ड्रन जो मोनोकल्चर है, राइट, दे लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस मोर स्लोली देन दोज फ्रॉम मल्टीकल्चर। मल्टीकल्चर मीन्स डिफरेंट कल्चर, मोनोकल्चर मीन्स वन कल्चर, राइट? सो वो स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा है, और देन आपको क्या फोकस करना है कि वो मोर स्लोली करते हैं, मोर क्विकली करते हैं, या समथिंग एल्स। क्या है आपका स्टेटमेंट, राइट? जब आप पैसेज में रीड करोगे देन यू विल कम टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज learning 3 languages at school does not have a negative effect on personality. अब does not have a negative effect on personality. अब negative effect है या negative effect नहीं है, या कुछ और स्टेटमेंट है, आपको ये क्या करना है? रीड करना। The argument presented by John Smith are not relevant in a modern context. Now you have to focus कि जो आर्ग्यूमेंट्स जो भी जॉन स्मिथ में प्रेजेंट करे हैं, जो भी उन्होंने बोले हैं, वो रेलेवेंट है या वो रेलेवेंट नहीं है। More countries will have multiple official languages in the future. More countries. Now we have to see less countries है, more countries है, या number of कुछ countries दिया है। The results from classroom studies in Toulouse can be seen in other cities. अब results देखना है हमें कि वो other cities में seen हुआ है या नहीं हुआ, right? So जब भी आप questions को read करोगे, you have to focus on your key information first. Now let's begin this. You have to focus list of your questions. Which one do you prefer first? आपने read सारे questions करे यहाँ पे, अब आप pick किसको करोगे सबसे पहले? आपको लगता है कि you are able to find the 6th one quickly, तो आप 6th को find करो। आपको लगता है कि आप 7th वाला जल्दी से find out कर सकते हो, तो आप 7th को find out करो, right? So जब हमने list of questions देखे, I think कि मैं 8th वाला quickly find out कर सकती हूँ, because it has a name. यहाँ पे मुझे एक नेम दिया है जॉन स्मिथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पैसेज को स्किम करूंगी क्विकली, तो मुझे ये नेम बहुत इजीली मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज आई बिलीव टुलूसू। ये मुझे जल्दी से मिल जाएगा बिकॉज इट्स अ डिफरेंट वर्ड, राइट? सो मैं जल्दी से इसको क्या करूंगी? स्किम करूंगी, राइट? सो देयर आर सम वर्ड्स जो मुझे लगता है कि मुझे मेरे पैसेज में क्विकली मिलने वाले। सो क्वेश्चन नंबर 8 में से दिस वर्ड एंड क्वेश्चन 9 में से दिस। जैसे ही आपने डिसाइड करा, वंस यू हैव फाउंड द लोकेशन, आपको 8th की लोकेशन पता लग गई कि ये पैरा 3 में है या पैरा 4 में है, राइट? और आपको 10th की लोकेशन भी पता चल गई। नाउ सपोज ये आपका पैरा नंबर 3 में है
and this is in para number 5. You can read the section carefully. आप रीड करो दोनों पैसेज को केयरफुली और डिसाइड करो अपने आंसर को. जैसे ही आपको इन दोनों के आंसर मिल जाते हैं, यू कैन देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको कहाँ मिलने वाला है, इनके मिड में. वो मे बी 3 के एंड में हो, 4th के बिगनिंग में हो, या 4th में हो, या 5th के बिगनिंग में हो. इट डिपेंड्स. वो 3rd के बाद और 5th से पहले आपको मिलने वाला है, राइट. दिस क्वेश्चन नंबर 9. सो आप क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करोगे, इसके बाद ट्राई करोगे, राइट. और जब आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिल गया है, देन यू कैन सी कि आपको क्वेश्चन 7 उससे पहले मिलेगा आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो बिफोर दैट, राइट. तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है. एंड इट्स नॉट मैंडेटरी, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 से ही अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करो. इट्स अप टू यू. आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट आंसर्स आर इन ऑर्डर. आंसर्स आपके ऑर्डर में है, तो केयरफुली फाइंड आउट एनी वन आंसर और आपको सारे आंसर्स देन इजीली मिलने लग जाएंगे, राइट. नाउ वंस यू हैव लोकेटेड द आंसर इन द टेक्स्ट, जैसे ही आपको आंसर मिला, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सेक्शन को रीड करो केयरफुली. लुक फॉर द स्टेटमेंट्स. मेक श्योर यू लुक फॉर कीवर्ड्स ऑल्सो. जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट करे है, की इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इजिली कॉन्ट्रडिक्टेड. क्वाइट कॉमनली वर्ब्स को फाइंड आउट करो. वर्ब्स है, एडवर्ब्स है. एज अ फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यू ट्राई टू वर्क आउट कि स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है राइटर को सेम वे में, नहीं या हाँ. अगर वो सेम वे में सपोर्ट कर रही है, दैट मीन्स वो क्या है, यस है. बट अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, आपके कीवर्ड से ऑपोजिट है, देन दैट मीन्स वो नो है. एंड ओनली यूज नॉट गिवन व्हेन यू कांट डिसाइड कि वो यस है या नो है. तब आपका वहां पे क्या आता है, नॉट गिवन आता है. नो बेसिकली यूज इट एज अ लास्ट ऑप्शन, नॉट एज अ फर्स्ट ऑप्शन. आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. अब हमारा 6th क्वेश्चन था, चिल्ड्रन फ्रॉम मोनोकल्चर लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस मोर स्लोली, राइट. वो मोर स्लोली करते हैं देन दोज फ्रॉम मल्टीकल्चरल सोसाइटी. सो अगर आपका आंसर यहाँ पर यस होगा, सो उस यस के लिए देयर हैज टू बी एविडेंस कि यस वो स्लोली करते हैं, मोर स्लोली करते हैं, राइट. आपको एक एविडेंस मिलेगा मोर स्लोली का, करेक्ट. तभी आपका आंसर क्या होगा, वहां पे यस होगा. बट अगर आपका आंसर नो होता है स्टेटमेंट का, दैट मीन्स वहां पे एट द सेम स्पीड और मोर क्विकली. दैट मीन्स वहां पे कुछ एविडेंस होना चाहिए कि वो लर्न कर रहे हैं लैंग्वेज को एट द सेम स्पीड. दैट मीन्स मोर और लेस नहीं कर रहे हैं, राइट. या फिर मोर क्विकली कर रहे हैं. दैट मीन्स कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया. देखो, मोर स्लोली नहीं है, सेम स्पीड है, या फिर मोर क्विकली है. देर आर टू डिफरेंट कीवर्ड्स. हमें हमारी की इंफॉर्मेशन इज अबाउट मोर स्लोली. अगर हमें वहां पे मोर स्लोली मिलता है, दैट मीन्स आवर स्टेटमेंट इज यस. हमारी स्टेटमेंट यस है. बट अगर हमें वहां पे मोर स्लोली नहीं मिल रहा टेक्स्ट में, हमें मिल रहा है समथिंग एट द सेम स्पीड या मोर क्विकली, तो हमारा स्टेटमेंट सेट टू बी नो. तो वो क्या होगा, नो. बट अगर वहां पे कोई मेंशन ही नहीं है स्पीड के बारे में, सिर्फ चिल्ड्रन फ्रॉम मोनोकल्चर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है कि वो लर्न करते हैं फॉरेन लैंग्वेज बट मोर स्लोली, लेस स्लोली और मोर क्विकली, कोई स्पीड मेंशन नहीं है, देन इट इज सेट टू बी नॉट गिवन. तो वो क्या होगा, नॉट गिवन होगा. आपको सम पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन है, बट द एंटायर मीनिंग, एंटायर राइटर का क्लेम व्यू वहां पर नहीं मेंशन, देन इट इज सेट टू बी नॉट गिवन. क्लियर. सो आपको इस एडवर्ब का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टेटमेंट्स को रीड करते हो, अपनी की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करो, राइट. सो अगर ये एडवर्ब मोर स्लोली कॉन्ट्रडिक्ट होता है, वो सेम नहीं गिवन आपको, देन वो नो होगा. और अगर वो एविडेंस है, मोर स्लोली लिखा है वहां पे प्रेजेंट है, देन इट इज सेट टू बी यस. क्लियर. फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर. Yes, everyone. Any doubt still here, please? With the first statement, first question. Yes, everyone. I can't hear you. Yes, Baljinder.
Umang, Komal, Deepika? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now let's see the statement number 7 and 8. Now, statement says learning three languages at school does not have a negative effect on personality. Does not have a negative effect. Now, what does it says? कि थ्री लैंग्वेजेस अगर आप लर्न करते हो स्कूल में तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है पर्सनालिटी पे. डज नॉट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट. तो आपको फोकस करना है जब आप क्वेश्चन रीड करोगे आपको चेक करना है कि वहां पे डज नॉट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट है या डज नॉट हैव अ पॉजिटिव है. क्या स्टेटमेंट आपको दिया है, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 says the arguments presented by John Smith are not relevant in a modern context. तो अब आपको इस क्वेश्चन में चेक करना है कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो रेलेवेंट है या वो नॉट रेलेवेंट है, राइट? सो जब आप सेवेंथ क्वेश्चन को रीड करते हो अगर आपको वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, if there is no mention of anything like it has positive or negative effect on personality or no mention of whether the arguments are irrelevant or irrelevant, तब आप क्या करोगे? It is said to be not given. अगर आपके सेवेंथ क्वेश्चन में कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिया, दैट मीन्स वहां पैसेज में स्टेटमेंट में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट का मेंशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट गिवन. अगर वहां पे मेंशन है कि डज नॉट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट देन इट इज यस. और अगर वहां पे मेंशन है डज नॉट हैव अ पॉजिटिव देन इट इज सेड टू बी नो, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा. सो आपको इन कीवर्ड्स को फोकस रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कीवर्ड को फाइंड आउट करो पैसेज में कि नेगेटिव इफेक्ट है या पॉजिटिव. अगर डज नॉट नेगेटिव है देन इट इज यस, बट अगर डज नॉट पॉजिटिव है देन इट इज सेड टू बी नो, राइट? एंड सेम वे फॉर क्वेश्चन नंबर 8, अगर नॉट रेलेवेंट वहां पे मेंशन है कि आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट तब वो यस होगा. अगर आर्ग्यूमेंट्स आर रेलेवेंट है देन इट इज नो, तो वो नो होगा. बट अगर वहां पे आर्ग्यूमेंट्स का रेलेवेंसी और इरेलेवेंसी कुछ भी मेंशन नहीं है देन इट इज सेड टू बी नॉट गिवन. yes, am I clear till here? Got it? How you have to differentiate between yes, no, and not given Yes, statement? Okay. Yes, ma'am. Now let's see question number 9. More countries will have multiple official languages in the future. Now they are talking about more countries. कि more countries में क्या होगा? Multiple official languages होंगी future में. So in this case ये क्या है? More is a proportion word, right? इससे हम एक proportion count कर सकते हैं. तो अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है मोर कंट्रीज का, मतलब पैसेज में मोर कंट्रीज से रिलेटेड कुछ वर्ड है, कीवर्ड है, सिनोनिम है, देन आपका आंसर यस होगा. बट अगर वहां पे मोर की जगह फ्यूअर कंट्रीज लिखा है तो ये क्या हो गया? इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी, बिकॉज स्टेटमेंट में आपको मोर दिया है, पैसेज में अगर आपको फ्यू दिया है देन इट इज नो, आपका स्टेटमेंट हो जाएगा नो. बट अगर पैसेज में कुछ भी मेंशन ही नहीं है अमाउंट का, दैट मीन्स नो मोर, नो लेस, नो फ्यू, नथिंग, कुछ भी नहीं मेंशन, कोई अमाउंट मेंशन नहीं है, कोई प्रपोर्शन मेंशन नहीं है, देन इट इज सेड टू बी नॉट गिवन. तब वो स्टेटमेंट आपका नॉट गिवन काउंट होगा, बिकॉज यहाँ पे कीवर्ड क्या कह रहा है? मोर कंट्रीज. क्लियर? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कब स्टेटमेंट यस है, कब नो है, एंड कब नॉट गिवन है. यस के लिए आपको एविडेंस मिलेगा मोर कंट्रीज का, राइट? कॉन्ट्रडिक्टरी होगी स्टेटमेंट तब भी आपको एविडेंस मिलेगा कि वहां पे मोर नहीं है, फ्यू कंट्रीज है. दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी, ये ऑपोजिट हो गया ना. क्वेश्चन में मोर बोला है, पैसेज में फ्यूअर कंट्रीज है, दैट मीन्स इट इज नो. बट अगर पैसेज में कुछ भी मेंशन नहीं है, मोर, फ्यू, लेस, नथिंग इज मेंशन, कोई अमाउंट, कोई प्रपोर्शन मेंशन नहीं है, देन इट इज नॉट गिवन. ओके, ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल थ्री.
Let's look at the 10th one. The results from the classroom studies in Toulouse can be seen in other cities. अब जो results हैं classroom studies के वो और cities में seen कर सकते हैं, can be seen in other cities. So here the verb is a keyword. So results can either be seen in other cities. अगर other cities में results seen होंगे तो आपका statement क्या होगा? Yes. अगर results not seen है तो आपका statement होगा no. बट अगर वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि वो सीन होंगे या नहीं होंगे, then it is said to be not given. Try to understand the difference. Results from classroom studies in Toulouse can be seen in other cities. अगर passage में आपके article में can be seen से related कुछ present है कि results either can be seen in other cities, तो वो statement yes है. बट अगर वहां पे लिखा है कि results from classroom studies in Toulouse cannot be seen in other cities, then it is no. और अगर वहां पे कोई भी आइडिया नहीं है कि रिजल्ट सीन होंगे या रिजल्ट सीन नहीं होंगे, देन इट इज सेड टू बी नॉट गिवन. क्लियर? सो सी द डिफरेंस. आप डिफरेंस देखो कि नो एंड नॉट गिवन में नो को हमने प्रूव करा है, राइट? क्योंकि वहां पे मेंशन है कि रिजल्ट सीन नहीं होंगे. हमारे पास एक एविडेंस है जो सपोर्ट कर रहा है कॉन्ट्रास्टिंग व्यू को. बट नॉट गिवन के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है. दैट मीन्स कोई स्टेटमेंट ही नहीं है एविडेंस, राइट? सो रिमेंबर कि होल सेंटेंस नीड टू बी मेंशन इन द आर्टिकल. अगर उसे yes और no होना है तो वो होल स्टेटमेंट वहां पे प्रेजेंट होगा. बट अगर आपको सिर्फ ओनली पार्ट ऑफ सेंटेंस मेंशन है, दैट मीन्स वो क्या है? नॉट गिवन है. क्लियर एवरीवन? क्लियर विद ऑल द स्टेटमेंट्स? यस प्लीज. Yes, ma'am. Yes. Anyone Yes, having ma'am. any doubt Yes, ma'am. with yes no not given statements? If you are not able to identify कि क्या no होता है, क्या yes है, and what is not given, please let me know. I'm gonna explain it more. Clear? Yes, ma'am. It's all Let's clear. practice. Let's practice one of the exercise then. Yes. So now here is one exercise for you. You have few minutes to do this. There are 5 questions. Please read the questions very carefully and then find out your answers. Okay? Over the decade, organizations have been introduced to educate travelers and visitors about the advantages of ecotourism. Ecotourism business has acquired a strong position in the market. Now you have to see कि उन्होंने strong market acquire करी है या नहीं करी है. Ecotourism Society was the first established in 1990 with the objective of making ecotourism a genuinely used tool. This guides the travelers on the choice of their eco tours and sponsor them. Educational campaign was introduced by TESS to make the tourists understand the positive and negative impacts of their travel decision. Underline all your keywords and then find your answer. Once ready, please type your all answers in the chat box.
Yes, everyone. How much time more? Yes, please. Well done, Deepika. All answers are correct. Yes, everyone done? You have to be quick. This is a reading exam. You have to improve your reading speed. Yes, Baljinder, Umang, Komal. Okay, let's discuss the answer. The very first question says, over the decade, organizations have been introduced to educate travelers and visitors about the advantages of ecotourism. So, who can explain this? Anyone? Yes, anyone who can explain this? This answer is yes. Can anybody explain this? So, see here, over the decade, there are few organizations that have sprung up. Sprung means introduced. Sprung up in the last 10 years. Last 10 years means decade. Or so that endeavor to educate travelers and operators about the benefit of responsible ecotourism. Benefit means advantages. Sprung up means introduced. Last 10 years means decade. So the answer is yes. Second question, ecotourism business has acquired a strong position in the market. Any statement which talk about that they have acquired a strong position in the market? Yes, anyone? What is the answer for this one? Second one, No, ma'am. not given. There is no statement. कोई evidence है yes या no वाला? No, ma'am. कि उन्होंने कोई strong position या not strong position acquire करी हो market में, ऐसा कोई statement ही नहीं है. Third question, the Ecotourism Society was first established in 1990 with the objective of making tourism a genuinely used tool for conservation and sustainable development. So see here, it is here. So with the objective means with the aim, genuine tool and sustainable development, right?
Fourth one, test guides the traveler on the choice of their eco tours and sponsor them. So क्या वो travelers को guide करते थे for the choice of their eco tour और sponsor करते थे? Yes, please. Anyone? They only offer the guidance. वो सिर्फ क्या ऑफर करते थे? गाइडेंस ऑफर करते थे ऑन द चॉइस ऑफ इको टूर्स. दे नेवर स्पॉन्सर. वो स्पॉन्सर नहीं करते थे. सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी. दिस इज नो. Educational campaign was introduced by TES to make the tourists understand the negative and positive impacts of their travel decisions. Yes. तो ये क्यों लॉन्च किया गया था? Yes, it was launched. Yes, please. Anyone? For positive and negative impacts of their travel decisions के लिए, right? Introduce means it was actually launched, right? Educational campaign aimed at helping consumer understand the potential positive and negative impacts, right? Clear, everyone? All the answers? मैम फोर्थ क्वेश्चन रिपीट कर दो. फोर्थ वन वॉज ओनली मेंशन. देखो सिर्फ चॉइस ऑफ इको टूर मेंशन है, स्पॉन्सर करते हैं ये मेंशन नहीं. सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी. देखो, ओके मैम. टेस्ट गाइड करता है द चॉइस ऑफ इको टूर, बट स्पॉन्सर करता है ये हमें मेंशन नहीं है. सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी, राइट? मैम ये ऑर्डर में नहीं हुआ ना आंसर. फोर्थ का आंसर पहले, बाद में, और फिफ्थ का आंसर पहले. maybe this question is in upside form. That's why you will get it always in order. आपको हमेशा ऑर्डर में मिलेगा. Now let's do one more. Quickly do this. Are you able to see? Second exercise. So again, you have 4 to 5 minutes. Quickly complete this.
Anyone who has done? What about two more, Baljinder? You have done only three. And Baljinder, we are doing yes, no, not given, not true, false. राइट सो आपको यस नो नॉट गिवन में आंसर देना है, नॉट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में. अगर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखोगे, मार्क्स यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, यू विल लूज ऑल योर मार्क्स. ओके Okay, ma'am. okay, so let's discuss the first answer. Dr. Suzanne Jebb said that genetic defects for obesity may be rare. So what do you think, what is this answer? No, Why it is no? because Yes. mentioned in a paragraph said the University of Sydney professor Len Carson Ian say Catterson, yes. It was yes. not Dr. Suzanne Jab, it was Ian Catterson, right? So we have evidence, है ना? हमारे पास evidence है कि हम prove कर सकते हैं that this statement is no. Contradict कर रही है, right? क्योंकि यहाँ पे name opposite दिया है. It's contradictory. Second statement, some people are genetically liable to putting on weight. Yes, please. Second one. Yes, second one. See the middle of the paragraph. The result is that some people are genetically predisposed to putting on weight. So predisposed is like they are genetically liable to putting on weight. So this statement is yes. Third one, Ketterson believed that science will help in curing some of the obesity forms. Yes. Some of the obesity forms will be cured. कैटरसन ऐसा बिलीव करते थे. No, ma'am. Mm-hmm. Yes, ma'am. Which statement? Third one, ma'am. Why third one is yes? Not given. He is confident. He is confident that science will eventually be able to cure some of the forms of obesity. Can you read the statement? See here. Yes, He is confident that science will eventually be able to cure some of the forms of obesity. That means yes. Obese people often try to deny their responsibility. क्या हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट गिवन है obese people से रिलेटेड कि वो डिनाई करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को? नो, वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस फॉर दिस स्टेटमेंट. हमारे पास कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मेंशन नहीं है जो ये बताए कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर डिनाइंग, नथिंग. सो फोर्थ वन इज नॉट गिवन. क्लियर? Fifth one of the most effective ways to lose one of the most effective ways to lose weight is to exercise daily and follow a healthy eating plan. So it is given that the only effective way for vast majority of overweight and obese people to lose weight is a change of diet. Change of diet means following a healthy diet plan and increase in exercise. Increase in exercise means exercise daily. Yes, everyone, clear? Yes, please. yes. Yes, ma'am. Any doubts still here in the second exercise? Please let me know.
Clear? Why the statement was yes, why it was no, and why it is not given. You need to differentiate, right? You need to know how to make a difference between yes and not given. Q statement yes hota hai, Q statement no ho jata hai, and why it is not given. You need to understand these rules, right?